નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી પોતાની YouTube ચેનલ એવી ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર। તો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર જે બીજા સેમેસ્ટરની અંદર આપણું ચોથું ચેપ્ટર જે છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, એ ચેપ્ટરનો આજે આપણે અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન આજે આ એક જ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને તમારે પૂરેપૂરો છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર જોવાનો છે મિત્રો। અને હા, જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો હમણાં જ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેવાની છે। તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો જોઈ શકો છો, સૌપ્રથમ છે આપણો અભ્યાસ। અભ્યાસની અંદર પહેલા પ્રશ્નની અંદર છે કે કથનों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1 कि शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है क्यों? तेना जवाब જોઈએ तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त है। उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। आगे जाइए। आगे से प्रश्न नंबर 2 कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। विधान स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। प्रश्न नंबर 3 कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। विधान स्पष्ट करवानुं छे। तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आगर जोई सको छो। बीजो छे, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप क्या क्या प्रश्न पूछेंगे और उसके प्रश्न और उत्तर आपको लिखने हैं। तो जोई सको छो तमने संपूर्ण ज्या छे प्रश्न एना जवाबो तमने आपेला छे। जे मित्रों तमे विडियो स्टॉप करीने संपूर्ण प्रश्न आंसरो जे छे एकवार ध्यानथी वांचीने पछी तमारे लखी लेवाना छे। तो जोई सको छो संपूर्ण प्रश्न आंसरो तमने अहींया आपी दीधेल छे। जे तमारे विडियो स्टॉप करीने मित्रों संपूर्ण प्रश्न आंसरो जे छे वांचीने लखी देवाना छे। आगळ तीजे संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 प्रश्न से 10 प्रश्न हो। तो आज ब्लू कलर थी मार्क करेला छे ए तमारा पाठ्यपुस्तकमां छे। नेक्स्ट જોઈએ તો જોઈ શકો છો। નેક્સ્ટ મિત્રો તમને જે પ્રશ્ન છે રેડ કલર થી છે અને એને આન્સર જે છે ગ્રીન કલર થી તમને માર્ક કરીને આપેલા છે, જે તમારે સંપૂર્ણ એકવાર વાંચીને પછી તમારા નોટબુક ની અંદર તમારે લખી લેવાનું છે। અને જો ચેનલ ઉપર ફર્સ્ટ વાર હોય, વિડિયો પહેલી વખત જોતા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમારે મિત્રો જવાનું છે। જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ આન્સરો તમને આપેલા છે। આગળ વધીએ। આગળ છે निम्नलिखित परिच्छेद को शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए, એટલે કે જે આ પેરેગ્રાફ છે એનો એ જ પેરેગ્રાફ આપણે સારા અક્ષરે લખવાનો છે। એકદમ સિમ્પલ છે। આગળ છે, આગળ જોઈએ। અહીંયા સુધી જે હતું એ હતું આપણું અભ્યાસનું સોલ્યુશન। હવે જે છે એ છે આપણા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहलो, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे किया? तो पंडित नेहरू के बाद देश को संभालना और उसे आगे ले जाना एक कठिन काम था, लेकिन देश ने यह पाप लिया था कि देश को संभालने की ताकत सिर्फ शास्त्री जी में ही है। वह जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र प्रेम की भावना से ही करते थे। देशवासियों को भी उन पर सबसे अधिक विश्वास और प्रेम था। शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और मजबूत संकल्प शक्ति से देश की इस आकांक्षा को पूरा किया है। आगे से बीजो प्रश्न कि लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो शास्त्री जी के व्यक्तित्व पर गांधी जी का गहरा प्रभाव था। गांधी जी के प्रभाव से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। गांधी जी के प्रभाव के कारण ही उनका मन देशभक्ति और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतों के उद्धार में अपने आप को लगा दिया था। शास्त्री जी ने गांधी जी के द्वारा चलाए गए रचनात्मक कार्यों में भी हिस्सा लिया था।
इस तरह गांधी जी का शास्त्री जी के जीवन पर गहरा प्रभाव था। आगे छे तीजो प्रश्न कि शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? આપણે એનો જવાબ જોઈએ तो शास्त्री जी के कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में उनके संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचन किया गया। सही महीने में यहां से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। चौथो जो है कि छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए? तो જોઈ શકો છો એ પ્રશ્ન પણ અહીંયા તમને સંપૂર્ણ આન્સર આપેલો છે મિત્રો, જે તમારે સંપૂર્ણ વિડિયો સ્ટોપ કરીને એકવાર વાંચી લેવાનો છે પછી લખવાનો છે। બીજો છે परिचित में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो જોઈ શકો છો અહીંયા અનેક શબ્દ નીચે અંડરલાઈન આપેલી છે। અહીંયા છે રેડકી, પછી અમિટ, પછી છે આધારશિલા। નેક્સ્ટ જોઈ શકો છો અહીંયા છે ખાદ। આગળ જોઈએ અહીંયા છે પલ્લવિત, પછી છે સૌરભ અને પછી છે સભ્ય। તેના મિત્રો આપણે પહેલા એના અર્થ જોઈ લઈએ। તો રીઢ શું આવે? મુખ્ય એટલે કે મેરુદંડ। પછી અમિટ, અમિટ તો શું થશે? અટલ। आधारशिला तो तसे नींव। खाद तो तसे जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, जिसे हम खातर कहते हैं गुजराती में। पल्लवित तो तसे विकसित। सौरभ तो तसे सुगंध। नेक्स्ट मित्रों જોઈએ नेक्स्ट આગળ છે સભ્ય તો થશે શિષ્ટ, અને એનો આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું, એટલે કે પહેલા સ્વર આવશે પછી વ્યંજન આવશે। તો શું છે? અટલ, जमीन का उपजाऊ बनाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। આ તમારા સાચા શબ્દકોશના ક્રમમાં તમને અહીંયા આપી દીધેલ છે। તો નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ। આગળ છે ત્રીજો કે इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन के कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? આજે આપણો પાઠ છે એમાંથી આપણે શું શું શીખી શકીએ એ તમને અહીંયા પૂછવામાં આવેલું છે। તો આપણે જોઈએ જવાબ સ્વરૂપે कि लाल बहादुर जी का जीवन कर्म के प्रति समर्पण, विनम्रता, सादगी, सरलता जैसे गुणों से भरपूर था। हमें भी अपने जीवन में यही सब गुणों को स्थान देना चाहिए। हमें भी अपने काम के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। शास्त्री जी की तरह हमारा हर एक कर्म राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना चाहिए। हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर्मठ बनना चाहिए। इस तरह हम लाल बहादुर जी के जीवन के यह सारे सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो આપણો સાચો જવાબ તમને આપેલો છે। આગળ से चौथा कि यहाँ दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का कमंड कैसे उतारा होगा। એનો આપણે આન્સર આપવાનો છે। તો જોઈ શકો છો અહીંયા તમને આપેલી છે નાની એવી વાર્તા કે એક શેર था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का कमंड उतार दूंगी। અને જોઈ શકો છો એની વાર્તા તમને સંપૂર્ણ અહીંયા આપેલી છે હિન્દીની અંદર લખીને। જે મિત્રો તમારે વિડિયો સ્ટોપ કરીને સંપૂર્ણ વાર્તા એકવાર વાંચી લેવાની છે પછી લખી લેવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતો આપણો ધોરણ 8 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર બીજા સત્રની અંદર જે ચોથું ચેપ્ટર છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, એ ચેપ્ટરનો અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। તો મિત્રો વિડિયો સારો લાગ્યો હોય વિડિયોને અચૂકથી લાઈક કરીને જવાનું છે, અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, ફર્સ્ટ વાર આ વિડિયો જોતા હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરીને જવાનું છે તમારે। મળીશું આવનાર નેક્સ્ટ વિડિયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો। જય હિન્દ, જય ભારત।